Hello student, how are you having all? Today we have to learn chapter number 13 surface area and volumes MCQ. MCQ number 1. The total surface the total surface area of a cuboid, the total surface area of cuboid with length 20 centimeter, breadth 15 centimeter, and height 10 centimeter is dash centimeter square. The total surface area of a cuboid with length 20 centimeter, so L is equal to 20 centimeter, breadth, so B is equal to 15 centimeter, and height, so H is equal to 10 centimeter. So we have to find out the total surface area of a cuboid. Total surface area of a cuboid, and we know this formula. Okay, total surface area of a cuboid is equal to 2 in the bracket LB plus BH plus HL. Okay, LB plus BH plus HL. So 2 multiply by, in this bracket, L is equal to 20, B is equal to 15, plus B is equal to 15 multiply by 10 plus 10 multiply by H is 10 and multiply by L, that means 20. So 2 multiply by 15, 2s are 13, and last put this 0, and 15 multiply by 10, so 115. 2 multiply 20 multiply by 10, so 200. So last step you can do it yourself, so easy hai. Then second number, so second MCQ, the lateral surface area of a cuboid with length 15 centimeter, breadth 8 centimeter, and height 5 centimeter is dash centimeter square. The lateral surface area cuboid, the lateral surface area cuboid with length is given that L is equal to 15 centimeter, breadth is given that B is equal to 8 centimeter, height is given that H is equal to 5 centimeter. So we have to find out the lateral surface area of a cuboid. The lateral surface area of a cuboid, and we know this formula, the lateral surface area of a cuboid is equal to 2 in this bracket L plus B multiply by H. Okay, so 2 multiply by L is 15 plus B is 18 multiply by H is 5. So 2 5s are 10 plus 15 plus 8 23, so 23 tens are 230 centimeter square. Okay, it's easy. क्वेश्चन में ऑलरेडी लैंड ब्रेथ है एंड हाइट गिवन दैट है. वी हैव टू फाइंड आउट द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. आपको ओनली फार्मूला ही पता होना चाहिए, यानी कि फार्मूला ही रिमेंबर करना है. अगर फार्मूला आपको रिमेंबर है सो आपका मार्क्स कोई भी कट नहीं कर सकता. ओके, उसके बाद तो क्या है कि फार्मूला में वैल्यू ही पुट करनी है. ओके, देन नंबर थर्ड,
Number third, the diameter of a cylinder is 7 centimeter. The diameter of cylinder is 7 centimeter and its curved surface area is 220 centimeter square. Then its height is dash centimeter. देखो, the diameter of a cylinder, okay, cylinder, that means diameter how many? 7 centimeter. So first of all we have to convert this radius. Diameter is equal to 7 centimeter. So radius is equal to 7 upon 2. Diameter का half part it is our radius, and curved surface area of a, देखो, curved surface area is 220 centimeter square. Okay, we have two formula of a cylinder. First, the curved surface area. Curved surface area, that means cylinder में कौन सा surface यूज होगा? Only ये surface ही यूज होगा. So curved surface area is equal to 2 pi r h, और टोटल सरफेस क्या होगा? 2 pi r in the bracket r plus h. Okay, curved surface area of a cylinder is equal to 2 pi r h, and the curved surface area is given that 220. So 2 pi is not given that, so 22 upon 7. r is 7 upon 2, and the height the question marks. So 2 it is a cancel out, 7 it is a cancel out. So 220 is equal to 20 multiplied by h. So we have to find out h. So separate this 22, and 22 is a multiple number, so you have to separate transposing to left hand side. So it is a divided number, and we know that 22 cancel out, so here is 0, that means 10 is equal to h is equal to 10 centimeter. Okay, again क्वेश्चन में देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको एक तो क्वेश्चन रीऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या गिवन दैट है, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है. ओके, so the diameter of cylinder is 7 centimeter. So diameter given that है. So first step हमारा diameter को convert करना होगा. So we have to convert to radius. So 7 upon 2. यहाँ पे 7 divided 2 का हम division नहीं करेंगे, because लास्ट में अगर cancellation possible है, so आप देख सकते हो कि 2 cancel out हो गया है. अगर diameter का हाफ पार्ट पॉसिबल नहीं है, सो आपको डिवीज़न करना नहीं है, कैंसलेशन में वो कट हो जाएगा. अगर कट नहीं होता है तो लास्ट में हमें उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न तो करना ही है. एंड नेक्स्ट इज गिवन दैट कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर. कर्व्ड सरफेस दैट मीन्स ये सिलेंडर है, आप देख सकते हो कि दिस पेन इज ऑल्सो सिलेंडर. सो कर्व सरफेस एरिया दैट मीन्स ये सरफेस यूज हुआ है इस और उसकी फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच. सो कर्व सरफेस एरिया इज 220 इज इक्वल टू 2 एज इट इज पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7, आर इज इक्वल टू 7/2 एंड एच इज क्वेश्चन मार्क. सो एंड वी गेट द आंसर एच इज इक्वल टू 10. ओके, देन fourth, the total surface area of a closed cylinder with radius 3.5 centimeter.
The total surface area of a closed cylinder with radius 3.5 centimeter and height 6.5 centimeter is dash centimeter square. The total surface area of a closed cylinder with radius 3.5 centimeter and height, radius is given that and height is given that, r is equal to 3.5 centimeter and h is equal to 6.5 centimeter. So we have to find out total surface area of a closed cylinder. So total surface area of a closed cylinder is total surface area of a closed cylinder is equal to 2 pi r in this bracket r plus h, और r और h की वैल्यू गिवन डेट है, सो हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है एंड सिंप्लीफिकेशन 2 पाई इज इक्वल टू 22/7, r इज इक्वल टू 3.5, r इज इक्वल टू 3.5 प्लस h इज इक्वल टू 6.5, सो 7 5 is 15, sorry 7 5 is 35, so 7 7 it is a cancel out, so here is 2 remaining, here is 2 remaining, 22 remaining, 5 remaining, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 प्लेसेस है, सो पॉइंट रिमूव करके हमें डिनोमीटर में क्या राइट डाउन करना होगा, 10 अगेन, 2 एज इट इज, 22 एज इट इज, 5 7 35, 7 7 कैंसल आउट, 5 एज इट इज़, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 प्लेसेस है, सो पॉइंट रिमूव करके हमने यहाँ पे 10 राइट डाउन किया, और यहाँ पे एडिशन 3.5 प्लस 6.5, 3.5 plus 6.5 we get 0 ups and 10, 10.0 we get 10, okay, and 10 10 it is a cancel out, so 5 2s are 10, 5 2s are 10, multiply by 22, so 220 centimeter square, okay, 220 centimeter square. Again the total surface area of a closed cylinder curved surface area of a cylinder 2 pi rh, and the total surface area of a closed cylinder 2 pi r come in the bracket r plus h, or value put ki then after multiplication, okay, so answer became 220 centimeter square, okay. Then number 5, the curved surface area of a cone. Number 5, the curved surface area of a cone is 880 centimeter square if its slant height, that means L, if its slant height is 20 centimeter, then its diameter is dash centimeter. देखो डायमीटर फाइंड आउट करना, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस फाइंड आउट करना है. देखो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन कितना है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्लैंट हाइट दैट मीन्स L is 20 सेंटीमीटर. सो डायमीटर इज क्वेश्चन मार्क. डायमीटर फाइंड आउट करने से पहले रेडियस को फाइंड आउट करना होगा. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन की फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज अ पाई आर एल. सो कर्व्ड surface area of a cone is equal to pi r l, and curved surface area of a cone is 880. Pi is not given that, so use is 22/7. R it is a question mark and L it is a 20. Or we have to find out R, so remove this 22/7 and 20, and
7 is denominator, 7 is divided number, so it is a multiply number. You have to transposing left hand side, so divided number will be multiple number, and 22 and 20 is a multiple number, so it is a convert to divided number. Okay, so 0 0 it is a cancel out, and 22 4s are 88, so 20 it is a cancel out, and 4, so 2 2s are 4, so 2 and 7 remaining, so R is equal to 14 centimeter. Again कर्व्ड surface area की वैल्यू गिवन डेट है 880, पाई इज नॉट गिवन डेट, सो यूज इट 22/7, R is question mark and slant height is given that it is a 20 centimeter. So हमने वैल्यू पुट कर दी, then we have to find out R. So remove this 22, that means separate this 22, 7 and 20. Here is 7 divided number, so it must be a multiple number. 22 and 20 it is a multiple number, so it must be a divided number. Okay, and cancellation, so answer became R is equal to 14 centimeter. अब diameter find out करना, that means diameter, so radius का double होता है, so 14 double, so multiply by 2, so 14 का डबल 28 सेंटीमीटर, और 42 का भी 28 सेंटीमीटर. अगेन डायमीटर फाइंड आउट करना, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस, सो रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सो 14 का डबल कितना होगा 28 सेंटीमीटर. रेडियस डायमीटर से हाफ होती है और डायमीटर रेडियस से डबल. ओके, सो नेक्स्ट MCQ हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे. ओके, थैंक यू.